viewers, good morning. This is NJ here. Welcome to English speaking class. Guys, girls, my students, Shotao, Assalamu alaikum, Marhaban, Sabal Khair, Tajahao, Privet. Dear students, today we are going to view the use of narration in speaking. Narration plays an important role in speaking. Narration is always in two parts. First part is said to be direct speech, and after making changes, the second part is called indirect speech. So narration is a part and parcel of communication. It is also taught in schools and colleges. Let's see some important statements, some important sentences of direct speech and their change to indirect, and we will see the rules that apply for making the changes. There are certain changes, particularly change of verb, change of pronouns, change of specific words, and change of interrogative sentences to positive affirmative sentences, and the general change, raising the commas and adding that. All these relate to this narration, and by rules we apply these things. Let's start our lesson today. Up here, the first statement you see, my students, here, direct speech. डायरेक्ट स्पीच को बराह रास्त गुफ्तगू कहा जाता है. डायरेक्ट स्पीच के मानी है बराह रास्त गुफ्तगू, जो दो फ्रीकैन के दरमियान फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, फर्स्ट पार्टी एंड सेकंड पार्टी के दरमियान जो बातचीत या डायलॉग होता है, उसे डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है. आज का जुमला देखिए, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट. और ये बात भी जहन में रखिए कि जो डायरेक्ट स्पीच है ये दो हिस्सों में होती है. एक पहला हिस्सा होता है और फिर कॉमर्स के अंदर इसका दूसरा हिस्सा होता है, जबकि इनडायरेक्ट स्पीच में ऐसा नहीं होता. लेट्स सी अगेन, ही सेड कॉमा, ये फर्स्ट पार्ट है, पहला हिस्सा है. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ डायरेक्ट स्पीच, and you see comma and inverted comma start. This is the second part inside the commas. Read it. They take rest. They take rest, commas close, full stop. So this is the present tense. They take rest. वो आराम करते हैं. वो आराम करते हैं. वो आराम करते हैं. And in the first part of this direct speech, you see that he said. This is past tense. Said is the second form of said. He said, उसने कहा, comma inverted comma start. They take rest, comma close, full stop. वो आराम करते हैं. So this is direct speech between two parties. He said, उसने कहा, comma inverted comma start. They take rest. वो आराम करते हैं. They take rest. वो आराम करते हैं. They take rest. वो आराम करते हैं. Let's see how it's going to change to indirect speech. आइए अब यहाँ पे यू सी माय स्टूडेंट्स, इनडायरेक्ट स्पीच जो है ये बिलवास्ता गुफ्तगू होती है. जो बात पहले की गई है डायरेक्ट स्पीच में, उसे थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन जो है उसे रिपीट करे, उसे दोबारा से रिपीट किया जाए, तो इसे इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है. आइए देखते हैं ये कैसे है. ही टोल्ड, सेड की बजाय हम यहाँ पे टोल्ड भी लिख सकते हैं. ही सेड, ही टोल्ड, सेड एंड टोल्ड हैव द सेम मीनिंग. ही सेड उसने कहा, ही टोल्ड उसने बताया. He told that, we have said here, we can write told as well. So he said, he told that, yeah, when we go to the commas, by rules we remove the commas and we insert that, because this is a positive affirmative statement. All affirmative statements, memorize this rule that when we write first part in affirmative statements approaching to the commas, we remove commas and we write that. रिदम तुलबा, ये बात याद रखने की है कि जब हम इंटरेक्ट में लिख रहे होते हैं तो पहला हिस्सा लिखने के बाद जब आप कॉमर्स पे पहुंचते हैं तो कॉमर्स को रिमूव करना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि ये रूल्स में है. और कॉमर्स की जगह पे हमें दैट लिखना होता है. दैट्स व्हाई दैट इज हियर. ये वजह कि हमने यहाँ पे दैट लिखा. और ये तमाम पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में होगा, मुस्बत जुमलों में होगा. अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ऐसा किया जाएगा. सो up to here we have he told, he said that. Now we approach to the inside statement. They is a third person
and this is a pronoun, plural pronoun. So rules के तहत, क्वाइट के तहत, plural pronouns are never going to change. He, third person pronouns are never going to change. There is a plural pronoun and third person pronouns जिसमें he है, she है, they है और it है, इनकी चेंज नहीं होती. अगर इनसाइड द कॉमर्स ये वाले they, he, she, it आएंगे तो ये थर्ड पर्सन प्रोनाउंस कहलाते हैं. और नरेशन के जो रूल्स हैं, कायदे हैं, उनके तहत इनकी चेंज नहीं होगी, इनको वैसे लिखा जाएगा. दैट्स व्हाई दे इज देयर. सो अप टू हियर वी हैव he said that they, he told that they. Now we go to the verb form take, because take is a present tense and in the first part of the direct speech is a past. So by rules you see here is again past in indirect speech. So if we have the verb past form here, then inside we will change the verb form, it will change to the past. So take second form is past form is took. So we write here took. According to rules, we have to make this change of verb. Take will change to the second verb form took. So we write here took. So let's read it. He told, he said that they took rest. Rest will remain as it is. They took rest. उन्होंने आराम किया. Commas are removed and full stop. This is a positive statement. And we have, you see, my students, बिल वास्ता गुफ्तगू में चेंजेस के बाद जिसमें हमने वर्ब की चेंज देखी, प्रोनाउंस की चेंजेस देखी और कॉमर्स को चेंज देखी. और उन चेंजेस के बाद जो नया सेंटेंस, जो नया स्टेटमेंट हमारे पास है, वो ही टोल्ड दैट, ही सेड दैट दे टुक रेस्ट. उसने बताया कि वो और उन्होंने आराम किया, कि वो आराम करते थे. उसने बताया कि उन्होंने आराम किया या वो आराम करते थे. This is the way we make changes of narration from direct speech to indirect speech. And you see, my students, there are change of pronouns, change of verb, and change of commas, removing commas. We add that in positives, affirmative sentences. And let's see the next statement. आइए अगले जुमले की तरफ बढ़ते हैं. Next expression or statement is, you see, that speak. Ali said, comma inverted comma start. Ali said, Ali ने कहा, comma inverted comma start. I do not read. Comma is close, full stop. I do not read. I do not read. मैं नहीं पढ़ता हूँ. Here again you see, my students, this is direct speech. ये बराह रास्त गुफ्तगू है. अली ने बताया, अली ने कहा, कॉमा और कॉमर्स के अंदर स्टेटमेंट देखिए, आई डू नॉट रीड, कॉमर्स क्लोज, फुल स्टॉप, मैं नहीं पढ़ता हूँ. दिस इज आल्सो प्रेजेंट टेंस एंड रीड इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, whereas in the first part of this statement we have past tense said is the second verb form of said. So let's see how it's going to change again in indirect speech. आइए देखते हैं कि ये बिल वास्ता गुफ्तगू में कैसे इसकी चेंजेस होंगी. You see, my students, in indirect speech we have Ali told, that we write told instead of said. We can write said, but to beautify the statement we write told. Ali told, Ali ने बताया. Told is also the past form of tell. So Ali told, again positive statement. Approach to the commas, remove commas and write that. So Ali told that. Ali told that. Now we go to the inside commas. The first subject is I. By rules, I pronoun, first person pronoun, I said to be first person pronoun. I, we, our, us. So I will be replaced by outer subject, that is Ali. So I is replaced by Ali according to the rules of narration. So the pronoun of Ali is he, that's why we will write here he. So I is replaced by pronoun he. So we write here he. I is subjected. I is subject to change with Ali. So Ali's pronoun is he. We write here he. That he. Now the tense will go to the past. So told, and in past tense for negative statements we write did not. So do not will change by did not. So we write here did not because it's a past tense statement. It's all the past tense. So this verb form will change to the past, and read second form is also read, but we have did not here.
So he did not read. He did not read. After did not, we write the first verb form. So did not is a past tense negative sense. So let's read it out again. Ali told that he did not read. अली ने बताया कि उसने नहीं पढ़ा. अली ने बताया कि वो नहीं पढ़ता था. Again, you see, my students, he said that speech you see past and commas inside the commas first person I. Do not is the present indefinite tense. Do not read negative नेगेटिव सेंटेंस है. ये मनफी जुमला है प्रेजेंट डेफिनेट का फिलहाल का. तो यहाँ पे डू नॉट है. वेयर एज व्हेन वी गो टू द पास्ट टेंस वी नो दैट इन नेगेटिव sentences we write did not. That's why do not is replaced by did not and the first form of verb again. So this is also नेगेटिव स्टेटमेंट नेगेटिव सेंटेंस इन पास्ट टेंस. अली टोल्ड अली ने बताया दैट के he did not read. अली टोल्ड दैट he did not read. अली ने बताया कि वो उसने नहीं पढ़ा. अली ने बताया कि वो नहीं पढ़ता था. अली टोल्ड दैट he did not read. अली टोल्ड दैट he did not read. अली ने बताया कि उसने नहीं पढ़ा. You see, my students, a beautiful statements and sentences of narration. Let's move to the next statement. आइए अगले जुमले की तरफ बढ़ते हैं. Next expression is, ये देखिए direct speech है, बराह रास्त गुफ्तगू है. Z said to him. Z said to him. So this is the first part. Z said to him. यहाँ पे आप देखिए object भी है. Z said to him. Z is a subject. Said is a past verb form. This is a past tense. And to is a preposition. Him is an object. Z ने उससे कहा. Z said to him. Z ने उससे कहा, comma inverted commas start, do you well, commas close, interrogative sign. You see, my students, Z said to him. Z ने उससे कहा. Z ने उससे कहा. Z ने उससे पूछा. past tense and inside the commas you see do you work, क्या आप काम करते हो. Do you work, commas close, full stop. This is a present definite tense. Interrogative statement. This is an interrogative statement because do is in the stat and we have interrogative mark here. Do you work, क्या आप काम करते हो. तो जितम तलबा देखिए. Z said to him. Z ने उससे पूछा. Z ने उससे कहा. कॉमर्स आए और इन्वर्टेड कॉमर्स का आगाज हुआ. इन्वर्टेड कॉमर्स भी इन्वर्टेड कॉमर्स एंड डू यू रीड, क्या आप पढ़ते हो. कॉमर्स क्लोज एंड इंटेरोगेटिव सवालिया निशान है यहाँ पे. तो ये सवालिया जुमला है, क्या आप पढ़ते हो. ये प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है. उर्दू में इसकी पहचान है, क्या आप पढ़ते हो, और ये सवालिया जुमला है. सो इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस डायरेक्ट स्पीच बराह रास्त गुफ्तगू पहले इसमें हमने पास्ट टेंस देखा. जी सेड टू हिम. जी ने उससे पूछा. जी ने उससे कहा. कॉमा कॉमा स्टार्ट, डू यू वर्क, कॉमा क्लोज, इंटरोगेटिव साइन, क्या आप काम करते हो, क्या तुम काम करते हो. दिस इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस इन प्रेजेंट डेफिनेट. लेट्स सी हाउ इट्स गोना चेंज. आइए देखते हैं इनकी चेंजेस कैसे होंगे वास्तव पुस्तकों में. हियर सी माय स्टूडेंट्स इन डायरेक्ट स्पीच. जी आस्क्ड. So said is replaced by asked. Z asked, Z ने पूछा because Z जो है उससे पूछ रहा था, question था. So said is replaced by asked. So Z asked him. Z asked him. Z ने उससे पूछा. When we write asked, then there's no need to add to. After asked, after verb asked, preposition is not as added. So Z asked him. Said is past, so that's why we write here asked. Z asked him. Z ने उससे पूछा. Now here we go to the commas and question. In all questions and commas, if you see inside the commas, there is a questionary sentence or questionary statement, then simple questionary statement, then we will write if here and commas will be removed. Remember that in all simple questionary statements in any sentence, when we go to the commas, then we remove the commas and we write if or whether. There are two words, if or whether. So when we write here if, the spellings are easy. So if. So if is here, commas are removed. And second is that this interrogative will change to the positive. This will change to the affirmative sentence. It will not remain as interrogative as rules say. So ये सवालिया जुमला नहीं रहेगा, बल्कि ये मुस्बत जुमले में तब्दील होगा, क्योंकि कवायद जो रूल्स हैं नरेशन के उनको हमने अप्लाई करना है, रूल्स का इतलाक करना है. तो नरेशन के रूल्स को का इतलाक करते हुए इस सवालिया जुमले को हम मुस्बत में बदल देंगे. सो इफ के बाद देखिए यू इज अ सब्जेक्ट and you is
second person in English. So you is the second person. So second person inside the commas will be replaced by outer object that is him. So you must be changed by outer object that is him. तो जिस मतलब सेकंड पर्सन जो है कॉमर्स के अंदर अगर आ जाए जो कि यू है और यू ही होता है यू 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 आर योर्स। सो यू को जो है हमने हमेशा बाहर वाले मफूल के साथ ऑब्जेक्ट से चेंज करना है। सो यू विल बी रिप्लेस्ड बाय हिम और हिम की हमें जो है सब्जेक्टिव हालत चाहिए, फाइली हालत चाहिए, दैट इज ही। So we will write here he because we need a subject here. So you is replaced by outer object him and its subjective form is he. That's why हमने यहाँ पे he लिखा। you को तब्दील करते हुए बाहर वाले मफूल him के साथ उसकी फाइली हालत हमें चाहिए, that is he, और हमने यहाँ पे he ऐड किया। अब आते हैं verb की तरफ। verb is verb. So in first part we have past, so it will change to the past form, so that is worked. This is a regular verb, worked. So we write the verb. So the after writing the verb form, the sentence is complete. जुमला मुकम्मल हो जाता है verb form लिखने के बाद। We will write here. We will right, we'll stop here, so a full stop. So see now the statement is Z asked him if he well. जी ने उससे पूछा आया कि उसने काम किया। जी ने उससे पूछा if आया के अगर if या whether के माने आया के और अगर के लिए जाते हैं उर्दू में। if जी asked him if he worked, जी ने उससे पूछा आया के he worked उसने काम किया, आया के वो काम करता था। जी asked him, जी ने उससे पूछा आया कि वो काम करता था। You see my students, narration is very interesting topic and it's always in two parts, direct speech and indirect speech. We have seen some positive, negative and interrogative statements, sentences in direct speech, and then we change these statements and sentences to indirect speech. And after all, we conclude that this is an interesting topic and memorize all the rules that apply for changing verb forms, pronouns, and certain words, and commas, and other questionary statements to affirmative positive statements. Here, my students, I wish you all the best. I'll see you again. Goodbye. Goodbye.